Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Mrs. Vaijayanti Patil, Assistant Teacher. Today we are going to see the second part of the poem The Inchcape Rock, which is written by Robert Southey. In first part we have seen that first 8 stanzas we have studied. This poem has total 17 stanzas and now in this section we are going to study from 9th to 17th stanza. In first part we have seen the calm and the white atmosphere or weather of the sea, and in Inchcape Rock, which is situated in Scotland Sea, and on that Inchcape Rock, Abbot of Aberbrothock has placed the Inchcape Bell to warn the sailors from this perilous rock or dangerous rock. But in this poem there is a one villainous character, that is Sir Ralph the Rover, who has darked his who has spotted his eye on this floating object, that is on Inchcape Bell, and in his mind there is some wrong intimation he has to destroy the work of the Abbot of Aberbrothock. So he decided to do something wrong with this Inchcape Bell. Now what he is going to do, we will see in this video. So this is the first stanza, The Inchcape Rock by Robert Southey. It is 9th stanza and second section of this poem. The boat is lowered, the boatman row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. As we have seen, he has ordered his men that to row their boat to the Inchcape Rock, and he has the wrong intention that to destroy the work of Abbot of Aberbrothock, and he cut the Inchcape Bell, which warns the sailors from this dangerous rock. Because of the jealousy, he has destroyed the good work of the Abbot of Aberbrothock. So this is the analysis of stanza number 9. You can read it. The next stanza. Down sunk the bell with the gurgling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the Abbot of Aberbrothock. Now when he cuts the bell was sinking down by making the sound, gurgling sound, and the bubbles are also roses and burst on the surface. So he said, quoth means said, the next who comes to the rock won't bless the Abbot of Aberbrothock. जो भी इधर आएंगे इंचकेप रॉक के इधर, वो कभी भी दुआ नहीं देंगे एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को, क्योंकि अभी इंचकेप बेल जो है उनको वार्न करने के लिए नहीं है. तो ही इज वेरी हैप्पी because he has done evil thing. So this is the analysis of stanza number 10. Then next stanza. Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plunder store, he steers his course for Scotland's shore. After cutting the bell, Inchcape Bell, Sir Ralph the Rover sailed in the sea for many months, many days, and he collected the treasure, lots of money from the robbing the various ships, which was also shipwrecked because of the Inchcape Rock. And he has looted many ships, sailors, and he has collected wealth. So in next stanza we will see what he is going to do. Now he has decided to go to his home, which is in Scotland. And now what is the weather? See, so thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day, at evening it had died away. अभी इस स्टांजा में हमें ये पता चलता है कि जब भी सर राल्फ रॉवर ने बहुत सारी जो वेल्थ थी, ट्रेजर जो था, जो लूट किया था मैनी सेलर्स से, तो क्या करता है, अभी घर जाने की सोचता है, स्कॉटलैंड में उसका घर है. तो उसी वक्त जो वेदर है सी का वो अच्छा नहीं है, हर जगह फॉगी एटमॉस्फेयर है, सन भी नहीं दिखाई दे रहा है,
as well as they also can't see the land also. The wind had blown a gale all day. दिन भर जो है वो जो हवाएं है वो तेजी से चल रही है. एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, बट रात को शाम होने को जब आई थी तो उस वक्त जो हवाएं है वो थोड़ी कम हो गई है. हेज मतलब फॉग, गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म. इन शॉर्ट there is a very foggy atmosphere in the sea and they can't see anything else, the land also. So this is the analysis of stanza number 12. The next stanza. On the deck the rower takes his stand. So dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अभी राल्फ द रोवर अपने डेक पे आए हैं, शिप के डेक पे आए हैं और वो इंस्पायर कर रहे खुद को भी और उनके साथियों को भी कि डोंट वरी, देयर विल बी लाइटर सून. They are waiting for the moonlight. There were because of the foggy atmosphere they can't see the land also, but here the Ralph the rower is inspiring his men and as well as himself that in very soon there will be moonlight. So he is looking on the deck of the ship. So this is the analysis of stanza number 13. Next stanza. Cast here, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. Now one of them is saying that we can't see anything else. We cannot hear the sound of other things also, because the wind was very strongly destroying their intention, as well as there is a foggy atmosphere. That's why they can't listen, they can't see anything. So they were totally confused what to do, they don't know. So one of them is saying that मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ, काश हमें एक लैंड दिखता, काश हम इंचकेप बेल का आवाज सुन पाते ताकि हमें पता चलता कि हम किधर है. लेकिन सर राल्फ द रोवर ने ऑलरेडी जो इंचकेप बेल थी वो कट कर दी थी. दैट्स व्हाई दे कांट डू एनीथिंग नाउ, बिकॉज दे कांट लिसन द साउंड एज वेल एज दे कैनॉट सी द लैंड ऑल्सो. सो दिस इज द analysis of stanza number 14. Methinks means I think. It is the archaic word. It is used in the Old English language. So the next stanza. They hear no sound. The swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ! It is the Inchcape Rock. जब वो कोई भी आवाज सुन नहीं पा रहे थे, उसी वक्त जो विंड जो स्ट्रांगली बह रहा था वो भी थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन जो मूवमेंट्स थे वाटर के वो अभी भी स्ट्रांग थे. उनकी जो वेसल थी, वेसल मीन शीप्स एंड ड्रिफ्ट मतलब मूव स्लोली, देयर वेसल वेर ड्रिफ्टिंग स्लोली बट देयर शीप, उनकी जो वेसल थी, शीप थी, वो इधर उधर उनको भटका रही थी, वो डायरेक्शन उनको दिखाई नहीं दे रही थी, वो भटक रहे थे सी में, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किधर है. और उसी वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि किसी किनारे पे उनकी जो लहरें हैं, वेव्स है, वो टकरा रही है. तो उनको लग रहा था कि शायद हम सी शोर तक आ चुके हैं, लेकिन उसी वक्त एक चोर का झटका उनको लगता है. उनकी जो शीप है वो एक चीज से टकराती है और वो क्या चीज है वो उनको भी पता चल जाता है. वो चिल्लाते हैं, वो क्राइस्ट इट इज द इंचकेप रॉक. अब ये जो एक्सक्लेमेशन है ये सर राल्फ द रोवर का है. वो बोलते हैं, ओ क्राइस्ट, ओ जीसस, इट इज इंचकेप रॉक. अभी आपको भी पता होगा कि एक्चुअली क्या हुआ है. सर राल्फ द रोवर की जो बोट है, जो शीप है, वो इंचकेप रॉक से टकरा गई थी और धीरे धीरे वो पानी में ड्रॉन हो गई थी, सिंक हो रही थी. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ स्टैंजा नंबर 15. Sir Ralph the rower tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush
In every side the ship is sinking beneath the tide. वो समझ चुके थे कि अभी क्या होने वाला है। अभी वो डिस्पेयर में बहुत नाराज होकर वो क्या कर रहे हैं, खुद के हेयर्स जो है वो हार्शली टोर कर रहे हैं और खुद को वो कर्स कर रहे कि यार ये मैंने क्या किया, ओ क्राइस्ट, मैंने जो किया था एबॉट ऑफ एबॉट का काम बिगाड़ दिया था, उनका जो अच्छा काम था, तो मैंने वो इंच के बेल कट करके उनका काम जो डिस्ट्रॉय किया था उसकी सजा मुझे मिल रही है, ये मैंने क्या किया। उनको पछतावा हो रहा था। he was repenting, but there was no use of this time. The waves rush in every side. हर तरफ से वेव्स जो थी वो बह रही थी और उसमें उनकी जो शिप थी वो सिंक हो रही थी। The ship is sinking beneath the tide. टाइड के नीचे उनकी जो शिप थी वो सिंक हो रही थी। So this is the analysis of stanza number 16. You can read this and you can see the picture also, the repentant rower, the Sir Ralph the rower. And this is the last stanza. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rower hear, a sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. Now this is the situation where the sheep as well as the shipmen as well as the sailors were drowning. They understood that their death is now near, but even in his dying fear, one dreadful sound could the rower hear. In this situation also, the Sir Ralph the rower is listening the dreadful sound. जो भयानक आवाज वो सुन रहे थे, उनके माइंड में बज रही थी, और साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल, जब इंचकेप बेल की जो आवाज़ थी जो उन्होंने उस वक्त काटी थी पहले, तो उनकी जो आवाज़ थी उनके सर घूम रही थी, वो सुन रहे थे वो आवाज़, जैसे कि द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज हेयर हिज नेल, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, जैसे कि उनकी मौत नज़दीक आ रही है और जो डेविल है जो सी शोर के बॉटम में वो बेल बजा रहा है। इन शॉर्ट हियर जो सर राल्फ द रोवर है वो उनकी डेथ जो है वो नियर बाय हो गई है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस और एनालिसिस ऑफ दिस स्टैंजा नंबर 70। And what is the moral of this story? The moral of this story or the moral of the poem is that the poem Inchcape Rock, which is written by Robert Southey, it is the didactic poem, and we get the message that one should not willingly cause harm to others. If they do, they would be punished in the end. In other words, it is as you sow, so shall you reap. It is our work that pays back to us. That's why we have to do good things to the others as well as us also. We should not destroy the others' good work. जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। सो ये सीख जो है वो इस पोएम से हमें मिलती है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सो दिस इज द मोरल ऑफ द पोएम। So in this session we have seen 2.3, that is Inchcape Rock, which is written by Robert Southey. In next video we will meet with next new topic. Till then, thank you.